So in this chapter of we are going to discuss about the relationship of organism with one another and with the environment, right? अब उस रिलेशनशिप में सबसे पहला जो कनेक्शन आ जाता है, वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द एनर्जी फ्लो. और इसी एनर्जी फ्लो के बारे में अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट एनर्जी फ्लो इज. उसके बाद हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑन द सनलाइट. लाइट डिपेंडेंट जो है हम, वो क्यों हैं? व्हाई डू वी डिपेंड ऑन सनलाइट? क्योंकि सनलाइट जो है इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड यही बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, यही चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. यू कैन सी दिस कि ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं वो फूड के डिफरेंट न्यूट्रिशन के लेवल्स हैं. दीज आर द लेवल्स फॉर न्यूट्रिशन, राइट? अब ये न्यूट्रिशन के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, we call them trophic level, and the energy which is coming to the first step, that is producer. Producer कौन है बेटा? Producers are the organisms which are going to convert this solar energy. First they trap this energy and then they convert the solar energy into chemical energy. Solar to chemical energy, because glucose is the molecule which is made by the plants using carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. I repeat, plants are the producers, green photoautotrophs. They are growing to trap the sunlight. Then they convert this solar energy or energy of sun into the chemical energy into the form of glucose. During this process, they are going to combine two inorganic molecules. What are these two inorganic molecules? These inorganic molecules are two. और वो दो inorganic molecule जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? One is carbon dioxide, other is water. When they fuse together in the presence of chlorophyll or in the presence of sunlight, or is for Urdu wala or, and sunlight and chlorophyll must be present during this process, then they are going to make the equation like this: C6H12O6 plus oxygen. C6H12O6 plus oxygen. So they are going to use this energy into the formation of the glucose, which is the food product of the plant, plus they also make a byproduct in the form of oxygen. So when we talk about the producers are actually the plants which are going to absorb sunlight, and they convert this sunlight into solar energy, into chemical energy. They make food in the form of glucose. This glucose later on is converted into the different other molecules. Like if we talk about this glucose may be converted to make the starch as a storage product of plant. They can also make the cellulose for the cell wall of the plant. They can also make the sucrose for the translocation, sucrose and amino acid for the translocation. They also can convert it into the lipids. They can also make them lipids. So they can also make the different products out of them. So what we are saying here, that glucose is the actual molecule which is converted into different forms in the body of the herbivores. Herbivores are the animals which are going to eat the plants. तो eat, जो plant को eat करेंगे directly, जो प्लांट को डायरेक्टली ईट करेंगे, एरो मैंने इन्वर्ट कर दिया है, इन्वर्ट एरो इस तरह से, प्लांट पे डिपेंड करने वाले, प्लांट को ईट करने वाले जो होते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर. So we are showing here that what is happening from the producer. From the producer, food is, energy is moving. Energy which was trapped by the sunlight is converted into the chemical form.
this energy is moving to the second level. That was the first level. The second trophic level is known as primary consumers. Primary consumers are also known as herbivores. Why? Because they only eat directly plants. So primary consumers are eating them. Primary consumers are eaten by the other animals which are known as carnivores, or this level is known as secondary consumers. They are known as secondary consumers. Miss, Yes, Miss, from now on, the energy is going to move in a chemical form. yes, in the Okay. form of proteins, in the form of glucose, in all these forms, in the form of amino acids, in the form of the lipids. So this energy is going to convert in the form of these molecules, because we cannot absorb nitrogen, we cannot make glucose in our bodies, we cannot trap sunlight. All this is done by the help of plants that are known as producers. Producers are providing this energy to the primary consumer. Primary consumer is providing this energy to the secondary consumer, which are obviously carnivores, they eat plants. The secondary consumer are eaten by the tertiary consumers. Sometimes we can also have the quaternary consumers in the food chain. These are all animals. Miss, Yes, Miss, tertiary consumers are omnivores. sometimes, not necessarily. They eat directly animals. Sometimes they are not eating plants. They just depend on the animals. So they may also be carnivore only, right? After tertiary consumer, what is happening after tertiary consumer? The next levels comes. Quaternary may also be included sometimes, but next level most of the time it is decomposer. So when we talk about the environment, the relationship of living things with the non-living factors, or when we talk about the uh, connection of the environment and the habitat with the living things, this whole science is known as ecology. Eco means home and logos means study. The study of homes or habitat of the living organism is known as ecology. Ecology is concerned with the environmental biology because its latest name, new name, the new term which is used for it is known as environmental biology. In environmental biology, we are going to discuss about the conversion, interconversion of the energy. Number one. Number two, we are going to see the energy flow. You can see here, energy is flowing from producer to primary consumer to secondary, secondary to tertiary, tertiary to decomposer. And in this way, this energy is going to end at the decomposer. Decomposers are also known as recyclers. इनको हम recycler भी कह रहे हैं. They are recyclers as well. Why? Because they are going to recycle the material. And this material, some of the material is going to the ground. They are absorbed by the soil. Some of the material in the form of gases is absorbed back to the environment. So they are also known as recyclers. They convert solid bodies into liquid or gaseous form. So molecules are released from them, nutrients are released from them. They are going to absorb by the soil or they are going to be released in the air. So we call them, what do we call them? We can also call them recyclers. Recyclers. So what happens? They not only recycle, but they continue this cycle in this way that the energy which is flowing, it is a linear flow of energy. Can you see? Energy is flowing linearly, just like a straight line. Its Yes, flow Miss. is non-cyclic. This is a linear or non-cyclic flow of energy. Linear or non-cyclic flow of energy. This is called non-cyclic flow of energy. Right? This is a non-cyclic flow of energy. If this energy goes back to the sun, can it go back to the sun? No. That is why it is not a cyclic one. If it goes back to the sun, then we can call it a cyclic energy, flow of energy. But here the energy is not going back to the sun. It is scattered into the environment. It is lost to the environment, in the surroundings.
That is why we call it linear or non-cyclic flow of energy. But the most important thing for considering this number of trophic level and the energy losses, we can say here that the energy which is lost at every level is around 90%, which is lost at each level. So shorter food chains are more efficient in terms of energy. Why? Because if this plant is making the 10,000 kilojoule of energy, then 90% is lost. 1,000 is moving back, not back, moving ahead into the next molecule, into the next organism. So 1,000. After 1,000, it is converted into 100. After 100, it is remaining 10. Then after 10, the next level is getting only 1. So if we increase one more level, that the last level will not have any amount of energy, isn't it? तो शॉर्टर Yes. फूड चेन्स जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, क्योंकि उनमें जो एंड पे ऑर्गेनिज्म होता है, फूड चेन के एंड पे उसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलने के चांसेस होते हैं. बट अगर हम फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज करते जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? लास्ट ऑर्गेनिज्म जो होगा फूड चेन पे, उसको तो बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा या मिलेगा ही नहीं. तो इज इट गोइंग टू सर्वाइव? इज इट गोइंग टू सर्वाइव? No, miss. That is why for the proper flow of energy, for the survival of everything, we need to know about the process, that how energy is flowing. Now look, see what they are saying. A few example of our own dependence on photosynthesis is given. Sunlight is absorbed by the plants. Plants may be grasses. Miss, Plants may be flowering plants. जी बेटा? Miss book show नहीं हो रहा. Okay. Can you see it now? Sunlight is absorbed by the photosynthesizing wheat plants. Sometimes this photosynthesis is taking place in grasses. Sometimes this photosynthesis is taking place in the flowering plants. So, in the form of wheat grains are making flour, and flour is making bread, and it is used by the human, right? Sunlight is absorbed by the photosynthesizing grass. Grasses are eaten by the cows. Cows are producing milk. Milk is again making cheese, butter, and all these things. They are again consumed by the omnivores and like human. Photosynthesis takes place in the flowering plant. Flowering plant makes nectar. Nectar is used by the bees. Bees are making honey with the help of them. So it is again going to the, in any different form or in the form of any product, it is going to the use of the human. तो बताने की बात ये हुई यहाँ पे, what we can conclude के basically sunlight is the source of energy which is locked into the bonding of glucose. और वो ग्लूकोज की जो बॉन्डिंग है उसमें जाके वो एनर्जी लॉक हो गई है. अब वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज चाहे वो स्टार्च की फॉर्म में करे कन्वर्ट को, चाहे वो सेलुलोज की फॉर्म में करे, चाहे वो प्रोटीन या लिपिड की फॉर्म में करे, एनर्जी इज लॉक्ड इन द मॉलिक्यूल. And after the breakdown of these molecules during digestion, when the bonding is broken and protein is converted into amino acid, amino acid is converted into polypeptide chain is converted into amino acid. So in this way we can say that when the molecule break down, they release energy. So why do we eat? Why do we take food? हम फूड क्यों खाते हैं? इसीलिए खाते हैं ना, ताकि हमें एनर्जी मिले. और वो एनर्जी अगर हमारी बॉडी को मिलेगी तो इट विल हेल्प अस टू सर्वाइव लॉन्गर. It is going to help us to have the different functions of the body, like locomotion, like we can have the nervous coordination, we can have the active transport. There are so many other functions, growth, cell division, and anabolism. So there are so many functions.
So this energy is used by us for the reason that we are going to utilize that energy for the different processes of the body. Nearly all the energy released in the on the earth can be traced back to sunlight. जितनी भी एनर्जी अर्थ के ऊपर है, अगर उसका लिंक ढूंढा जाएगा, we start contact tracing, we will find that at the end of the tunnel there is a sunlight, there is a sun which is standing. Coal comes from the tree like plants buried million of years ago. अच्छा, हमने आपको ये वाली बात बताई थी जब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे क्या चीज, carbon fossil fuels, carbon cycle. Then I told you that day that when carbon compounds like organic compounds like plant and dead bodies and they are compressed and left under the soil for million of years, and they don't have the supply of oxygen which will help them to decompose. They are left without decomposition for million of years and they convert themselves into fossil fuels. So they are partly decayed bodies. उनका decay complete नहीं हुआ है. They are not completely decomposed. That is why they convert themselves into the fuel. They had all absorbed sunlight for photosynthesis. अब क्या हुआ, वो जो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के जरिए लाइट की एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी जो उनके अंदर स्टोर हो गई थी, वो तो पड़ी रहेगी ना उनके अंदर, वो तो डिकम्पोज हुआ ही नहीं है. डिकम्पोजिशन के मीनिंग क्या होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया उनको ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर, उनके अंदर से एनर्जी निकाल लेंगे अपनी सर्वाइवल के लिए, और उसको डिफरेंट फॉर्म में, गैसेस के मॉलिक्यूल की फॉर्म में या लिक्विड मॉलिक्यूल की फॉर्म में उनको वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, ताकि एनवायरनमेंट जो होता है वो अगेन रिच हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, एंड प्लांट्स आर गोइंग टू सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ दिस फर्टिलिटी. ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे मॉलिक्यूल है जो एयर में होते हैं, जिनको हम जब प्लांट या अदर एनिमल्स यूज करते हैं या कोई और चीज यूज करती है तो उससे वो बैलेंस रहता है एनवायरनमेंट में. टुडे इट इज पॉसिबल टू यूज मिरर्स एंड सोलर पैनल टू कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन डायरेक्टली. वो कह रहा है वैसे तो प्लांट का ही काम है कि प्लांट ही सनलाइट ट्रैप कर सकता है, लेकिन अब कुछ ऐसे पैनल आ गए हैं, सोलर पैनल, जो कि मिरर से सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं और उनको जब उन पे एनर्जी ज्यादा पड़ती है तो वो उसको स्टोर कर लेते हैं. सही है. अब स्टोर कर लेंगे अगर, तो जिस तरह यूपीएस चार्ज हो रहा होता है, जिस तरह सोलर पैनल के जरिए बैटरी चार्ज हो रही होती है, द सेम वे यही सोलर एनर्जी वो बाद में किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं. दे इंक्लूड स्टार्च, शुगर, ऑयल एंड वुड. तो प्लांट भी यही काम इस तरीके से कर रहे हैं कि दिन भर में वो जो फूड बनाते हैं, बाद में रात को फूड या उसी टाइम पे वो फूड कन्वर्ट होकर डिफरेंट प्रोडक्ट और भी बना सकता है. दे इंक्लूड स्टार्च, शुगर, ऑयल, वुड फॉर फूड और एज एनर्जी सच एज इथेनॉल इन द मोटर फ्यूल. वो कह रहे हैं इन्हीं को हम प्लांट्स को यूज कर सकते हैं इथेनॉल के तौर पे, फ्यूल के तौर पे. और ये फ्यूल फेमस हो रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा, क्योंकि जिसके अंदर प्लांट को इससे कन्वर्ट किया जाता है फर्मेंट करके इथेनॉल में, और इथेनॉल जो है वो एक गुड फ्यूल के तौर पे यूज किया जा रहा है. तो इवेंचुअली थ्रू वन प्रोसेस और अनदर ऑल द केमिकल एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म इज पास टू द एनवायरनमेंट. जितनी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी. हाउएवर इट इज नॉट साइक्लिक प्रोसेस लाइक दोज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर. फूड चेन और फूड वेब. अब वो कह रहा है फूड चेन क्या होती मिस, आई हैव अ क्वेश्चन. है. मिस, जब हम कह रहे हैं कि दिस एनर्जी फ्लो इज नॉट साइकिलेबल, लेकिन एनर्जी फिर भी वापस जा रही है एनवायरनमेंट में, सो हाउ इट इज पॉसिबल? एनवायरनमेंट में जा रही है, सन पे, सन के पास थोड़ी जा रही है. द मेजर सोर्स ऑफ सनलाइट इज द सन. हम्म. गेटिंग इट. जी मिस, तो थैंक यू. फूड चेन है क्या चीज, व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड चेन जो होती है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को शो कर रहे हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट, बिगनिंग विद द प्रोड्यूसर. फूड चेन की वजह से एक प्रोड्यूसर से फूड चेन स्टार्ट होती है, हमेशा प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर ही सनलाइट को ट्रैप करके उससे फूड बनाएगा और वो फूड चेन स्टार्ट होगी वहीं से ही. ठीक है ना. तो फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और बिगनिंग विद द प्रोड्यूसर, वन आफ्टर अनदर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से पास होती हुई वो पहुंच जाती है डीकंपोजर्स तक. ठीक है ना. अच्छा, फूड वेब क्या है. फूड वेब में डिफरेंट इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का पूरा एक वेब बना हुआ होता है, राइट. सो देयर आर डिफरेंट फूड चेन्स विच आर एंटेंगल्ड लाइक अ वेब. फिर बात करते हैं प्रोड्यूसर की. प्रोड्यूसर कौन है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन मेक देयर ओन न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉफ होते हैं ये, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी एनर्जी बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सिंपली आप इनको हेट्रोट्रॉफ भी कह सकती हो, या ऑटोट्रॉफ नहीं है। गेटिंग इट? तो कंज्यूमर इज अ हेट्रोट्रॉफ, नॉट ऑटोट्रॉफ। इट डिपेंड्स ऑन द प्रीपेयर्ड फूड। व्हाट इज हर्बीवोर? कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोर भी हो सकता है, कार्निवोर भी हो सकता है। हर्बीवोर वो होते हैं, वो एनिमल होते हैं जो कि अपनी एनर्जी डायरेक्ट बाय ईटिंग प्लांट ऑब्टेन करते हैं, इनको हर्बीवोर कह रहा है, हर प्लांट को कहते हैं। कार्निवोर वो एनिमल होते हैं जो अपनी फीडिंग अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? बाय फीडिंग ऑन ओनली और ईटिंग ओनली एनिमल्स। सही है। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या चीज है? डिकम्पोजर आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। वो डेड मटेरियल से या वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसी की मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अंडर द प्रेशर जब वो कंप्रेस हो जाते हैं सॉइल के अंदर, तो दे आर नॉट गेटिंग एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड दे आर नॉट इजीली डिकम्पोज, और वो ऐसी ही कंडीशन में पड़े रहते हैं सालों के लिए, सेंचुरीज के लिए, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में, लाइक गैस, लाइक कोल, लाइक पेट्रोलियम एंड ऑल दीज थिंग। ठीक है, उनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। मिस मतलब डिकम्पोजिशन के लिए वी नीड ऑक्सीजन। जी। डिकम्पोजिशन जो है उसमें वो रिस्पायर करते हैं ना, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी उन पर डिपेंड कर रहे होंगे, दे रिस्पायर। यस मिस। एंड व्हेन दे रिस्पायर दे आर गोइंग टू डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज। अब उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो वो कैसे ग्रो करेंगे बैक्टीरिया या कोई भी चीज वहां पे? तो वो इसलिए कभी कभार डिकम्पोज होती है तो पार्शियली डिकम्पोजिशन होती है, बहुत कम होती है। A trophic level in the position of an organism is a food chain. ट्रॉफिक लेवल क्या है? पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है फूड चेन के अंदर, कि वो कहाँ पे इसकी पोजीशन पे स्टैंड करता है, किस पोजीशन पे, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या प्रोड्यूसर है। फूड वेब, pyramid ऑफ नंबर और इकोलॉजिकल pyramid। ट्रॉफिकल लेवल में पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होती है फूड चेन के अंदर, फूड वेब के अंदर, या pyramid ऑफ नंबर में, या इकोलॉजिकल pyramid में। तो pyramid तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उन pyramids के अंदर ट्रॉफिक लेवल एक्चुअली उस ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को कहा जाता है कि कहाँ वो स्टैंड करता है इस जगह पे। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस होती क्या चीज है? इंटरडिपेंडेंस इज अ वे इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स depend on each other in order to remain alive, grow and reproduce। तीन पर्पस बताया उन्होंने, तीन मेजर। नंबर वन, वो why do they interdepend on each other? Inter means among। रिमेन अलाइव। Why there is a cycle of interdependence? Number one, they want to remain alive. Number two, they want to grow. नंबर थ्री, दे वांट टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपनी जनरेशन को मेंटेन करेंगे ना, नेक्स्ट। सही है। और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बीज डिपेंड ऑन मिस pollen and nectar from the flower for their food, and flowers depend on bees for pollination। तो इंटरडिपेंडेंस हो गई है। बीज अगर फ्लावर के पास आते हैं फॉर गेटिंग द नेक्टर, तो when they take nectar from the flowers and they sit on the bees are going to sit on the flower, then they help in the pollination। तो एक दूसरे से दोनों का लिंक हो गया ना, they depend for their life, for their survival, they depend on each other, right? In the same way, if we are dependent on the environment, environment is also maintained by us। ऐसे ही चीजें लूप की शक्ल में सर्कुलेट हो रही है environment में। जी मिस मतलब इंटरडिपेंडेंस में एबायोटिक फैक्टर्स वुड बी इन्वॉल्व्ड। बायोटिक इंटू एबायोटिक, एबायोटिक इंटू बायोटिक। ओके। Okay, now the pyramid of number and pyramid of biomass। What is pyramid of number? What is pyramid of number? Number means if we take the number into mind and we make a pyramid on the basis of number, then what is going to happen? Like they are showing you here the tree. In this you can say in this food chain, you can see here there is a inverted pyramid of number. Inverted pyramid of number means the tree is having only one number. Tree means only singular, right? Only one tree is involved in this whole food chain. So if tree is one number wise, so their trophic level will be very reduced in size, right? Then this tree is
the home or it is the source of food for the caterpillars. Caterpillars are surviving over there, they are obtaining food from them. So caterpillars, they are very small organisms, small animals which depend on the leaves, on the juices of the fruit and other things. So caterpillar are going to depend on the box tree. एक चीज आपने याद रखनी है, जितना स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर उतना लार्ज होगा। सही है, नंबर वाइज। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपने देखा हुआ तो होता है, उनका नंबर आपको नहीं पता, उनका साइज नहीं पता, लेकिन आपको ये आइडिया होता है ये चीज इतनी छोटी है, ये चीज इतनी बड़ी है। ठीक है ना। तो कैटरपिलर बहुत छोटे साइज के, स्मॉल साइज के एनिमल होते हैं। वो उनको ईट कर रहे हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे होने चाहिए नंबर में, एक ट्री के ऊपर है तो बहुत सारे होंगे। इसलिए उनका नंबर हमने बड़ा बनाना है, उनका ट्रॉफिक लेवल काफी वाइड होना चाहिए। ठीक है ना। देन वी कम टुवर्ड द वेस्ट। वेस्ट जो है वो और ऑर्गेनिज्म है जो इन कैटरपिलर्स को ईट करते हैं। तो वो भी थोड़े से बड़े हैं कैटरपिलर से, तो उनका नंबर जाहिर बात है हम कम बनाएंगे, कैटरपिलर उनका फूड है तो कैटरपिलर ज्यादा होते हैं। सही है, उनको हमने और छोटा कर दिया ट्रॉफिक लेवल में। फिर बी ईटर आ गया। बी ईटर जो है, जो इनको खा रहे हैं, उनको वेस्ट वगैरह को, बीज को, वो और बहुत कम है जो टर्शरी कंज्यूमर है। और जैसे जैसे नंबर कंज्यूमर की चेन के ऊपर हम ऊपर जाते जाते हैं, मूव करते हैं ऊपर की तरफ, तो उनका नंबर जो होता है ना, उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन। तो वो एनिमल्स जो होते हैं वो बड़े साइज के एनिमल भी हैं, दूसरे वो पॉपुलेशन में कम होते हैं टर्शरी कंज्यूमर। तो उनका नंबर हमने कम करने के लिए उनके ट्रॉफिक लेवल को छोटा बनाया है। सही है ना, उसको नैरो कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्लीज के ऊपर। फ्लीज जो होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट लाइक एनिमल्स होते हैं जो कि उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। वो कॉटनरी कंज्यूमर हो गए। अगर वो हम बात करते हैं उनकी, अगर वो फ्लीज हैं और वो उनके ऊपर सरवाइव कर रही हैं उसी के ऊपर, तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी जो उसकी बॉडी के ऊपर सरवाइव कर रही हैं। इसलिए उनका नंबर बड़ा है, तो हमने उस ट्रॉफिक लेवल को उसके हिसाब से बड़ा कर दिया। तो देख बता रहा है, ये नंबर वाइज ट्रॉफिक लेवल को नंबर के हिसाब से आप उसकी विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। लेकिन here you can see, अच्छा बेटा प्लीज ज्वाइन अगेन, टाइम इज गोइंग टू अप। जी मिस।